Hello guys, good evening everyone. Welcome to our Clavimate classes. Clavimate, it is your true story mate. Okay guys, so our Clavimate classes application specially design करा है किसी पिलाମାନଙ୍କ ପାଇଁ जोटी कि आमे प्रोवाइड करूछु तमनको हाई डेफिनेशन एनिमेटेड क्लासेस, लाइव क्लासेस, यूट्यूब बेस्ड डाउट क्लियरिंग, डेली प्रैक्टिस टेस्ट एंड वीकली टेस्ट. तो एई सब कोठी पाइबो ऑन Clavimate classes application रे. सो जल्दी ये एप्लिकेशन डाउनलोड करो एंड यार बेनिफिट्स को एंजॉय करो. तमे ये एप्लिकेशन गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर डाउनलोड कर परिबो. एंड निज फ्रेंड्स मन को मध्ये यूट्यूब क्लासेस रो लिंक शेयर करो. एंड जो मैं सब प्रीवियस क्लासेस रो वीडियो सब देखी न से माने प्रीवियस यूट्यूब रे अवेलेबल अछि. तमे लिंक गुडा को भी देखि परिबो, क्लासेस मध्ये करि परिबो. सो गाइस चलो आज रो क्लास हम स्टार्ट करिबा. तो हमें कंटिन्यू करूथिले सेल द यूनिट ऑफ लाइफ. तो आज कंटेंट्स अछि न्यूक्लियस. न्यूक्लियस ऊपर हम पढिबा. प्रीवियस क्लास में पढिथिले प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऊपर तार स्ट्रक्चर एंड मॉडल सब डिस्कस हेतिला. देन आज कोन हबो हम न्यूक्लियस ऊपर डिस्कस करिबा. ओके. सो फर्स्ट न्यूक्लियस. न्यूक्लियस कोन ताको हम आ कोन कहि थाउ. तार सिनोनिम होची न्यूक्लियस रो एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल और apparatus of heredity, director of cell, control room or heart of cell और cell brain मध्य कहि परिबा. सो न्यूक्लियस को हम कोन कहि थाउ एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल. जेहेतु साइटोप्लाज्म रे सेटा एक्स्ट्रा गोटे पार्ट रहुची. एडा हमर सेल हेई गला एंड सेल रो साइटोप्लाज्म रे एक्स्ट्रा पार्ट होची न्यूक्लियस. आ कोन कहउची apparatus of heredity, director of cell, control room or heart of cell or cell brain. History. Avi Leeuwenhoek, the first observed nucleus in RBCs of salmon fish. First nucleus के observe करिथिले salmon fish रे Avi Leeuwenhoek. Then आसिया Robert Brown जे कि ताकू nucleus रो name term देथिले. Strasburger demonstrated nucleus as cell brain and storehouse of hereditary information. स्ट्रासबर्गर साइंटिस्ट न्यूक्लियस को कौन कहते हैं सेल ब्रेन और स्टोर हाउस ऑफ हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन. ओके. तो ए सब होती न्यूक्लियस रो साइंटिस्ट जो माने किछि न किछि डिस्कवर करछन्ती न्यूक्लियस ऊपर. ओके. फर्स्ट एवी लेवेनहॉक देखिथिले. देन रॉबर्ट ब्राउन ताको न्यूक्लियस बोली नेमिंग करिथिले और स्ट्रासबर्गर तारो न्यूक्लियस कहथिले कि ताको सेल ब्रेन बोली से कहिथिले. एंड हमर जो जति कि इन्फॉर्मेशन अछि ओटे ऑर्गेनिज्म रो तार बॉडी सब इन्फॉर्मेशन स्टोर हेकि रहउछि तमर न्यूक्लियस भितरे. सो अबे भी देखिबे न्यूक्लियस रो डेफिनेशन कोन. Nucleus is a specialized double membrane bound organelle which contains the genetic information for controlling metabolism, growth and differentiation of the cell. So nucleus is a double membrane bound organelle जोटी कि हमर जीन रो इंफॉर्मेशन स्टोर हेकि रहउछि for controlling metabolism, growth and differentiation of the cell. गोटे सेल रे न्यूक्लियस होची गोटे डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल. देखो तार दुटा मेम्ब्रेन सराउंडिंग करिछि एंड या भीतर जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर हेकि रहउछि एंड से कौन कंट्रोल करे सेल रो मेटाबॉलिज्म, सेल रो डिफरेंट एक्टिविटीज, सेल रो ग्रोथ, सेल रो डिफरेंशिएशन, को सेल को एक्टिविटीज करिवे ये सब फंक्शन के डिफाइन करे न्यूक्लियस. Nucleus is the largest of all cell organelles. जेतिके हमर अछंती cell organelles सबरो largest होची nucleus. Study of nucleus is known as karyology. Nucleus ऊपर स्टडी करे हमें कहि थाउ karyology. Next, chemical composition occurrence. Nucleus present in all eukaryotic cell. सब eukaryotic cell रे nucleus present अछि. In mature sheep tube elements of phloem and mature RBCs of mammals, nuclei lost secondarily at maturity. Sheep tube हमर plant cell जोडा होची phloem रे आउ mammals मनकर mature RBC रे nucleus absent थाए. नहले every eukaryotic cell रे nucleus present अछि. Prokaryotic cell do not have organized nucleus. Means तांकर nucleus proper से true nucleus तांकर पकरे absent रहउची.
तांकर ताले कौन प्रेजेंट रहउची न्यूक्लियोइड इंस्टेड हाईली फोल्डेड सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल विदाउट मेम्ब्रेन प्रोकैरियोटिक मानक सेल रे न्यूक्लियस एब्सेंट रहउची ता बदले न्यूक्लियोइड अछि एंड न्यूक्लियोइड रे कोन रहिची एमती सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल प्रेजेंट अछि जहा को हम न्यूक्लियोइड बोली कहथौ तांकर न्यूक्लियस रो गोटे पर्टिकुलर मेम्ब्रेन कवरिंग भी नाही जेंति कि यूकैरियोटिक रे डबल मेम्ब्रेन कवरिंग अछि सेंति प्रोकैरियोटिक रे एब्सेंट अछि नेक्स्ट पोजीशन young and normal cell located in center of cell हमर जो न्यूक्लियस रो पोजीशन होची यंग सेल गोटे नॉर्मल सेल रे सीए सेंटर रे प्रेजेंट थाए मैच्योर प्लांट सेल रे push to peripheral region due to development of large central vacuole okay so young and normal cell रे सेटा सेंटर रे रहउची आ मैच्योर प्लांट सेल रे सेटा कोठ रहउची पेरिफेरल रीजन रे बुझिला then spirogyra nucleus occupies unusual position seen suspended in central vacuole by cytoplasmic strand spirogyra जोटा अछि सेटा तांकर न्यूक्लियस टा कोठ होची unusual position means कोठी भी गोटे प्रेजेंट रहइबो न्यूक्लियस टे ओके किंतु मैच्योर प्लांट सेल रे सेटा पेरिफेरी रही न्यूक्लियस टा बिकॉज़ तांकर वैक्यूल एटा लार्ज वैक्यूल थाए पेरिफेरी मींस टुवर्ड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन एटा रहिबो बिकॉज़ तांकर लार्ज सेंट्रल वैक्यूल गोटे प्रेजेंट थाए सेति आ नॉर्मल सेल रे सेटा सेंटर ही प्रेजेंट थाए तो हमें कौन देखिले न्यूक्लियस रो अकरेंस और पोजीशन डेफिनेशन नेक्स्ट कौन अछि देखिबा number uninucleate or eukaryon one nuclei most of eukaryotic cell are genetically uninucleate ଆମର ବେଶୀ eukaryotic cell ହୋଉଛନ୍ତି uninucleate म्हणजे ତାଙ୍କର single nucleus present ଅଛି ବୁଝିଗଲା ତାପରେ ଅଛି binucleate paramecium liver cells and cartilage cells ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି binucleate means ତାଙ୍କର ଗୋଟେ cell ରେ ଦୁଇଟା nucleus present ଅଛି multinucleate or polykaryon found in some cells of bone marrow, striated muscles, latex vessels, several fungi and algae. Okay. So multinucleate kahara rohuchi bone marrow cells कोड़ा करे striated muscles रे latex vessel जोड़ा कि plants रो और कुछ जोड़ा fungi और algae रोहुchi multinucleate. So animals जहार multinucleate cells रहइबो ताको हम कहउछन्ती syncytial cell. Plant and fungi जो multinucleate cells रोहुछि ताको कहउछन्ती हम सिनोसाइटिक सेल एनिमल्स मानकर syncytial plants रे सिनोसाइटिक मने रखिबा एटा सब क्वेश्चन आसी पारे next come to shape and size in majority of cell nuclei appear spherical shape in mature plant cell they appear oval or elliptical typical interphase nucleus it is 5.25 micrometer in diameter occupy 10% of the cell volume एटा होछ तमरा इंटरफेज न्यूक्लियस मींस जेतोले हमरा प्रोफेज एनाफेज लोक चली थाए ना माइटोसिस सेल साइकिल रो गोटे इंटरफेज आसे हैला माइटोसिस आ मियोसिस त मजे गोटे इंटरफेज आसे तो इंटरफेज रे कोन होची हमर सेल टा रे पर्टिकुलर तार सब किछि मेटेरियल प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड है कि न्यूक्लियस प्रेजेंट थाए तार डीएनए आरएनए क्रोमोसोम सो सेटर लेंथ होची 5.25 माइक्रोमीटर इन डायमीटर सेल रो 10% वॉल्यूम न्यूक्लियस प्रेजेंट थाए एमे देखले हमें नंबर्स एंड शेप एंड साइज ऑफ न्यूक्लियर नेक्स्ट देखिबा गोटे इंटरफेज न्यूक्लियस रे कोन पार्ट्स रहउची एंड तार स्ट्रक्चर एटा गोटे न्यूक्लियस जोटा कि इंटरफेज रे प्रेजेंट थाए देखो कोन रहउची मेन इंपोर्टेंट पार्ट है न्यूक्लियर एनवेलप न्यूक्लियोप्लाज्म न्यूक्लियर मैट्रिक्स क्रोमैटिन न्यूक्लियोलस हैला न्यूक्लियर एनवेलप न्यूक्लियोप्लाज्म न्यूक्लियर मैट्रिक्स क्रोमैटिन न्यूक्लियोलस तो देखो एटी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जोड़ा अटैच हेची एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को तमरो आसिकरे न्यूक्लियस से अटैच हेची तापर एटी क्रोमैटिन अछि न्यूक्लियोप्लाज्म अछि डीएनए एसोसिएटेड प्रोटीन न्यूक्लियोलस प्रेजेंट अछि सर्कुलर न्यूक्लियोलस न्यूक्लियर लैमिना आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन हम कहली ना न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर तो गोटे आउटर गोटे इनर मेम्ब्रेन तब न्यूक्लियस रे एटा पोर
आउ इंटरमीडिएट फिलामेंट सब ए सब देखो जो साइड रे देखा होछ स्ट्रक्चर सब फिलामेंट टाइप रो इंटरमीडिएट फिलामेंट कहंती जोटा कि न्यूक्लियस को सपोर्ट करूची। सेंट्रोसोम प्रेजेंट अछि माइक्रोट्यूबल्स न्यूक्लियोलैमिना ए सब न्यूक्लियस रो मेन इंपोर्टेंट स्ट्रक्चर तमे पांचटा जोड़ा अछि हमर न्यूक्लियर एनवेलप रे आसी जे आउटर इंटर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोप्लाज्म जोड़ा कि साइटोप्लाज्म टा न्यूक्लियर मैट्रिक्स टा ऊपर डिस्कस करिबा क्रोमैटिन ऊपर न्यूक्लियोलस ऊपर ओके एटा है स्ट्रक्चर न्यूक्लियस रो तापर आसे न्यूक्लियोलस देखो न्यूक्लियोलस को टाइप रो देखा जाउची न्यूक्लियस भितरे गोटे सर्कुलर टाइप रो न्यूक्लियोलस है ताको एटा जूम करके देखाइची पेरी न्यूक्लियर क्रोमैटिन ग्रैन्युलर पोर्शन राइबोसोमल प्रिकर्सर जेड तो राइबोसोम फॉर्मेशन हबो मैट्रिक्स रहउची तो कहउची पार एमॉर्फोस फिब्रिलर पोर्शन आरएनए फाइब्रिल इंट्रान्यूक्लियर क्रोमैटिन एटा होची इंट्रान्यूक्लियर क्रोमैटिन क्रोमैटिन रु ही तमरो क्रोमोसोम देन डीएनए एंड आरएनए सेटा फॉर्मेशन होते भितरे रही थाए एटा हेला न्यूक्लियस स्ट्रक्चर नेक्स्ट न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स तब जब न्यूक्लियस रो पोर देखिला ना न्यूक्लियर पोर ये देखो पोर ए पोर स्ट्रक्चर होची ए होलटा ए पूराटा होची न्यूक्लियर पोर स्ट्रक्चर न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स रे कोन रहउची एसु विषय में परे डिस्कस करिबा बस डायग्राम में भी देखि थाओ फाइबर कोर कि प्रोटीन रहउची पेरी न्यूक्लियर स्पेस एटा रिंग रिंग टाइप स्ट्रक्चर अछि पोर रे स्पोक लागि सेठी ट्रांसपोर्टर मॉलिक्यूल न्यूक्लियर एनवेलप जो अछि हमर दुटा न्यूक्लियर एनवेलप मतलब विटामिन टा होची न्यूक्लियर पोर त मझे न्यूक्लियर पोर अछि इंटरमीडिएट फिलामेंट रहउची बास्केट न्यूक्लियोप्लाज्म तो एबे हमें गोटे गोटे करके स्ट्रक्चर डिस्कशन करिबा नंबर 1 अछि फर्स्ट जोड़ा न्यूक्लियर एनवेलप The nucleus is surrounded by a nuclear envelope consists of two parallel membranes separated by a fluid-filled perinuclear space. The nucleus को दीटा envelope surrounded करिछि दीटा parallel membrane सेमानकर separation केमति हिछि fluid-filled perinuclear space द्वारा. The outer membrane is continuous with the membrane of endoplasmic reticulum at several places and its outer face is studded with ribosome. न्यूक्लियर एनवेलप रो आउटर मेम्ब्रेन टा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम संगे कंटीन्यूअस हेची त जो आउटर मेम्ब्रेन अछि हमर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सहित सेटा कनेक्ट हेची एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ए टाइप रो थाय स्ट्रक्चर तो सेटा सहित न्यूक्लियर एनवेलप कनेक्टेड The nuclear envelope is supported by nuclear lamina from inside and a network of intermediate filament from outside. Inside ru तार रहउची न्यूक्लियर लैमिना आउ आउटसाइड रू रहउची कोन फ्रॉम आउटसाइड रू इंटरमीडिएट फिलामेंट्स रहउची जोटा कि ताकू स्केलेटल सपोर्ट प्रोवाइड करूची न्यूक्लियर लैमिना कंपोज्ड of lamins A B and C which are specialized type of IF filaments एटा होची गोटे फिलामेंट लैमिन्स कोडा कहउचंती A B and C गोटे फिलामेंट जोटा कि न्यूक्लियर लैमिना न्यूक्लियोलस भितरे प्रेजेंट रहउची नेक्स्ट Nucleoplasm. It is a transparent, semi-fluid, colloidal ground substance of the nucleus. ହେଲା न्यूक्लियस भितरे जो हमन लेखुछी लिक्विड पार्ट अछि ताको हमें कहउछंती न्यूक्लियोप्लाज्म बट ट्रांसपेरेंट सेमी फ्लूइड लाइक a structure semi fluid अछि colloidal ground substance. It is composed of nucleic acid, proteins, enzymes and minerals. Function कौन न्यूक्लियोप्लाज्म रो provides turgidity to the nucleus, holds chromatin nucleolus, contain raw material for synthesis of nucleic acid and ribosomal subunits. Okay. So nucleoplasm रे तमर रहउची turgidity रहउची nucleus को से गोटे strong means गोटे proper shape provide करूची chromatin को से धरि के रखिची nucleolus को धरि के रखिची nucleoplasm आ जे रहउची कोन nucleic acid माने हमर डीएनए आउ आरएनए तयारी हेबा पई जहा हमर रॉ मटेरियल दरकार सेटा भी रहिची न्यूक्लियोप्लाज्म भितरे न्यूक्लियोप्लाज्म एक लिक्विड सब्सटेंस जोडे कि न्यूक्लियस से प्रेजेंट थाए नेक्स्ट nuclear matrix count it is a network of proteinaceous fibrils that traverse
the whole nucleus. Okay, our whole nucleus will cover korichi. Towards periphery, below the nuclear envelope, nuclear matrix form a dense maze called nuclear lamina, nuclear context or lamina densa. ସେଟା କୋଉଠି ରହୁଛି periphery ଆଡକୁ below the nuclear envelope. Nuclear matrix form a dense maze called nuclear lamina. Function କଣ? Maintain nuclear shape. Nuclear lamina provides attachment sites to terminal ends. Chromatin fibers or telomeres of chromosome. ତ ଏଇଟା କାମ ହଉଛି କଣ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଗୋଟେ ସେପ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରେ ଏଣ୍ଡ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଲାମିନା ଯୋଉଟା ଅଛି ସିଏ କ୍ରୋମାଟିନ୍ ସହିତ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ କରିବାରେ ହେଲ୍ପ କରେ ମାନେ କ୍ରୋମୋଜୋମ ସହିତ ଲାମିନାଟା ଆଟାଚ ହେଇକି ଥାଏ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ ହେଇଗଲା ତାର ଯୋଉ ଲାମିନା ରହୁଛି ସିଏ ଆଟାଚ ହେଇଯାଉଛି ତମର କ୍ରୋମାଟିଡ ସାଙ୍ଗରେ ଯିଏକି ତାକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛି ଆଟାଚମେଣ୍ଟ କରିବାରେ Number 4, chromatin. Chromatin कौन? It is a hereditary DNA protein complex that makes up chromosome. Hereditary DNA protein complex. ଯିଏକି ତିଆରି କରେ କ୍ରୋମୋଜୋମ ହେରିଡିଟି ମାନେ କଣ ଯୋଉ ଆମର ଗୋଟେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ବା କିଛି ବି କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଫ୍ରମ ପେରେଣ୍ଟସ୍ ରୁ ଆମର ଅଫସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ବା ଚିଲଡ୍ରେନ୍ସ ପାଖକୁ ଆସୁଛି ତ ସେଇଟା ଆମର ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସରେ ଷ୍ଟୋର ହେଇକି ଥାଏ ତାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ହେରିଡିଟାରୀ ଇନଫର୍ମେସନ In an interphase nucleus, the chromatin occurs as fine filaments called chromatin fiber, which is distributed in form of diffuse network called chromatin reticulum. In interphase nucleus, two types of chromatins are visible: euchromatin and heterochromatin. Chromatin दिटा टाइप रो होची गोटे यू आ गोटे हेटेरो सो फर्स्ट देखिबा हमें euchromatin is a diffuse lightly stained transcriptionally active form of chromatin chromatin गुडाक ए टाइप रो थाए हैला तो जोटा टिके देखिबा डार्क अछि रीजन टा माने सेटा होची तमरो हेटेरोक्रोमाटिन जो टिके लाइट रीजन थिबो सेटा हबो euchromatin मु जो जो सब डार्क रीजन सब ड्रा करूची से पार्ट गुडा को तमे कहि परिबो हेटेरोक्रोमाटिन और लाइट पार्ट जेटा रही गला सेटा को कुआ हबो euchromatin ए टाइप रो ए पार्ट टा हला euchromatin एटा heterochromatin Heterochromatin is highly compact, darkly stained, transcriptionally inactive homochromatin. Transcriptionally means ଆମର transcription process ହୁଏ ଯୋଉଠିକି ତମର DNA ରୁ RNA ତିଆରି ହୁଏ ହେଲା ସେତେବେଳେ ସେଟା inactive ଥାଏ କୋଉଟା heterochromatin part Only 10% of euchromatin is transcriptionally active at a time. Chromatin consists of DNA approximately 31%, histone 36%, non-histone तमरा 28% ଆଉ RNA होची 5%. ବୁଝିଲା Chromatin ପରେ next ଦେଖିବା ଆଉ ଟିକେ ରହି ଯାଇଛି function ତାର ପଢିବା histones are the major protein of chromatin chromatin ରେ histone protein present ଥାଏ ଯୋଉଟା କି ଗୋଟେ basic amino acid and that facilitates binding to the negatively charged DNA. 5 types of histone proteins H1, H2, H2B, H3 and H4. ପାଞ୍ଚଟା type ର ରହୁଛି ଆମର nucleoprotein. Next देखो function. Package DNA into smaller volumes to feed inside the cells. Strengthen the DNA to allow mitosis and meiosis. Control gene expression and DNA replication. Okay, so we have chromatin the function. DNA को से हमर DNA ର लेंथ बहुत बड़ अछि ताको से छोटो स्मॉल पेस्ट इनती पैक करिक रखिबो सेटा हला chromatin ର काम से histone protein संगे बाइंड हेथे एंड ताको पैकिंग करिक रखे the last part is nucleolus. The nucleolus is a membraneless spherical dense colored body present in the interphase nucleus. Usually nucleus found attached to chromatin at a specific region called nucleolar organizer region which represent secondary construction of the nucleolar organizing chromosome. Example is male chromosome 6 and 9, human chromosome 13, 14, 15, 20 and 21 contains NOR. Generally, a nucleus contains 1 to 4 nucleoli. Cells of bacteria and yeast lack nucleolus. Okay. Nucleolus होउचंती spherical dense substance होते. Okay, से chromatin सहित attach ही थाए ताको होउची nucleolar organizer region आउ which represents secondary construction of the nuclear organizing chromosome male 6 and 9 रे human chromosome 13, 15, 20, 21 रे NOR region present अछि
जनरली गोटे न्यूक्लियस हमर 1 ରୁ 4 न्यूक्लियोली प्रेजेंट थाए आ बैक्टीरिया येस्ट न्यूक्लियोलस न थाए Okay, smaller or no nuclei found in the cells with little or no synthetic activities, example sperm cell, blastomeres, muscle cell. While oocyte of the xenopus contain up to 1600 nuclei. The outer structure of the nucleolus has 4 parts: amorphous matrix, granular area, fibrillar portion, chromatin region. चारटा पार्ट अछि तमरा गोटे न्यूक्लियोलस रो देखो सबुठु amorphous matrix गोटे अछि जोटा कि भीतर पार्ट मैट्रिक्स पार्ट amorphous granular area जोटा मिडिल पार्ट होछि ग्रैन्युल्स रे ताको कहि granular area fibrillar portion जोटा फाइबर्स प्रेजेंट है तो fibrillar portion को आजे आ chromatin region होछि जोटा का आउटर दा chromatin region. First, amorphous matrix. It is a homogeneous ground substance of the nucleolus which is composed of protein. Matrix से protein रहता को कहा जाए pairs amorpha. Granular area or pars granulosa. It consists of granules of the size of 150 to 200 angstrom which lie scattered in the amorphous matrix. These granules contain protein and RNA in the ratio 2:1. These are precursor of ribosomes. Next, fibrillar portion. In the center of the nucleoli, there is a region of much denser fibrous network surrounded by granular area. It is composed of large number of small fibrils that are 50 to 80 angstrom long. The fibrils contain both proteins and RNA and are the precursor of granules. The chromatin region, the chromatin present in the nucleoli is of two types. Perinuclear chromatin, it surrounds the nucleolus like a cell, or the intranucleolar chromatin, its tubules project into nucleolus. The chromatin region. The function of nucleolus function कौन? It is the principal site for the formation of ribosomal RNA. RNA तैयारी हुए rRNA. Nucleolus is the center for the formation of ribosome. Ribosome के साथ तैयारी हुए. It stores nucleoprotein. These are synthesized in the cytoplasm over the ribosome and transferred to nucleolus. It is essential for spindle formation during nuclear division. So nuclear division हुए इटा spindle के help करे हमरा mitosis और meiosis time में spindle fiber. Next, function of nucleus. Nucleus का कौन function? It controls the ongoing activities of the cell by determining which protein molecules are produced by the cell and when they are produced. है ना? Cell ले को protein molecules तैयारी हबो and तार सेटा कौन activities continue करिवो तार function कौन रहिवो सेटा cellular nucleus determine करिवो. It is done through the formation of RNAs, mRNA, rRNA, tRNA, which control synthesis of different enzymes. Okay. It stores most of the cell genetic information passing onto the daughter cells of the course of cell division. Whenever cell division हुए, गोटे cell अच्छी divide ହେଇକି से दुईटा cell formation करे. तो cell division time रे से कौन करे तार genetic information जोटा अच्छी सेटा से गोटे cell daughter cells मान को transfer करे. Chromatin part of the nucleus possesses all the genetic information that is required for growth and development of organism, its reproduction, metabolism and behavior. Genetic information रोहे जोटा कि उटे organism रो growth ऊपर depend करूची development ऊपर तार reproduction तार behavior metabolism ए सब information रोचे chromatin रे. Ribosome essential for protein synthesis in a cell are formed in the nucleolus of the nucleus. Ribosome गुड़ाको nucleolus रे रोचे. It initiates and controls cell division in organism. It induces genetic variation that contributes to evolution. ଆମର evolution କେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ gene ରେ କିଛି ଗୋଟେ changes ହବ ତାକୁ ବି mutation କହନ୍ତି. ତ mutation ହେଲେ gene ରେ change ହେଲା then ଯୋଉ ବି organism ର body ସେ changes ଟା ହେଇଥିବ ତାର evolution ହବ means ସେ ଆଗରୁ ଯେମିତି ଦେଖା ଯାଉଥିଲା ତାର body ର function ରେ କିମ୍ବା body ର structure ରେ କିଛି ଗୋଟେ difference ଦେଖାଯିବ ତାକୁ ଆମେ କହିବା କି ତାର evolution ହେଇଛି. It brings about cell differentiation by keeping only certain genes operational in particular cells. से कौन करिवो cell differentiation means को cell रो काम कोन रहिवो. ओके तो सेटा से किछटा genes ऊपर से activity depend करूची. तो ए टाइप रो न्यूक्लियस हम सेल रे फंक्शन करि थाए. ताको टोटल हम ताको सेल रो ब्रेन भी कहि परियो बिकॉज़ ता हाथ रे सब कुछ कंट्रोल ताको कंट्रोल रूम भी हमें कहि थाउ. गोटे ऑर्गेनिज्म रो होल बॉडी रो इंफॉर्मेशन तार अदर एक्टिविटीज हे गला सब किछि रो इंफॉर्मेशन जीन रे स्टोर हेकी थाए एंड जीन तमरो न्यूक्लियस भितरे थाए कोठी क्रोमोसोम भितरे जीन रहउची
एंड क्रोमोसोम टा न्यूक्लियस भितर रहउची। तो हम आज पढ़ले कोन न्यूक्लियस गोटे मेजर ऑर्गेनेल ऑफ द सेल। तो समस्त जहाँ भी हम आज पढ़ले ताको भलसे रिविजन कर, किछि भी डाउट्स ले कमेंट सेक्शन रे कमेंट कर। तो आज क्लास हम एतिक रखिबा, पुनी नेक्स्ट क्लास रे आ गोटे न्यू पढ़िबा, न्यू ऑर्गन विषय रे पढ़िबा। सो गाइस आज क्लास एतिकी। थैंक यू ऑल।